I have a confession to make. I've held a secret for the last 730 days. Something I have never, not once, कभी किसी से नहीं बताया. Not to my closest friends, not to my family. यहाँ तक कि मेरी छोटी बहन जिसे मैं कुछ नहीं छुपाती हूँ उसे भी नहीं बताया. Not to anyone who knows me. I have been disappearing. And I have been smiling the whole time. Actually, मेरी लाइफ का बेस्ट लाइव परफॉर्मेंस चल रहा है. I was giving the living performance of my lifetime. You know me as someone who always has a plan. वो अर्चना जिसके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है. वो अर्चना जो फाइटर है. वो अर्चना जब किसी रूम में जाती है चेयरफुली वहाँ की एनर्जीज बदल जाती है. आई वॉन्ट यू टू नो वो अर्चना रियल है. बट द ट्रूथ इज मैं एक ऐसे बोझ के साथ जी रही हूँ इस समय जो शायद किसी को भी तोड़ देगा. इट्स अ वेट दैट वुड हैव क्रश्ड एनीबडी. फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों में आई हैव वोकन अप every single morning to silence. And every day I got dressed, I smiled, I showed up wherever I was needed. मुझे जब भी जहाँ भी पहुँचना था मैं हंसते हंसते वहाँ पहुँची. आपस में अपने मन में जूझते हुए स्ट्रगल करते हुए. And I told no one what I'm going through. Because I didn't know how to be Archana and be struggling at the same time. This is not me. I thought ये 2 चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती. लेकिन मैं गलत थी. I was wrong. ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. जीना अंदर ही अंदर घुटन मेरे साथ कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ. अभी हो रहा है. Right now, on this camera, in this room, at my home, this is the truth. अभी इस समय अपने आप से मेरी जंग चल रही है जो किसी को दिख नहीं रही है. मुझे महसूस हो रही है. They say कि when you are at 54, which is what I am now, a woman should be at the peak of her high security. She should be harvesting the fruits of her success. But today I am harvesting a total different reality. Let me tell you how the season has been. Not a version, what I post on social media. The real one. 2018 में मैं पीक पे थी. कॉर्पोरेट मर्जर, बिग वन, crown on my head as the crown queen of performance success, and suddenly it collapsed. Everything what I had built didn't just break, it disappeared. मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई. From there the life got slower. और फिर कोविड आया. कोविड ने तो मार ही डाला. Professionally started fading. But then again I regained. 2021 में रियल स्टेट, बिग प्रोजेक्ट्स, बिग लॉन्च, ग्रेट सक्सेस. बट आई वॉक्ड थ्रू अ गोल्डन केज. लाइफ केम टू अ फुल स्टॉप. I saw myself in room full of people where I was invisible. मैंने देखा है कैसे लोग धीरे धीरे मेरी जिंदगी से गायब होते गए. I have watched people fading away from my life. जैसे जैसे मेरा स्टेटस गया वैसे वैसे उनका साथ भी छूटता गया. मैंने वो अकेलापन महसूस किया है जहाँ
बाहर सब परफेक्ट दिखता है पर अंदर सिर्फ सन्नाटा है, साइलेंस। आई हैव फेल्ट द पर्टिकुलर लोनलीनेस जहाँ मेरी लाइफ बाहर से तो बहुत ही खूबसूरत दिखती है लेकिन अंदर इट वॉज हॉन्टिंग साइलेंट। एंड हियर इज वॉट नो बडी प्रिपेयर्स यू फॉर द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ, pretending. The hardest part is pretending there isn't any problem. Because when you are the strong one, हमेशा सब कुछ होल्ड करने वाले, आप भूल जाते हो कि कभी कभी आपको भी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप भूल जाते हो आप भी टूट सकते हो। You can also break. I forgot that. For last 2 years of my life, I forgot that I can also break. जो सीक्रेट मैंने 730 डेज से रखा है अपने साथ, आज मैं उसको शेयर करने जा रही हूँ। द रियल एंड द ऑनेस्ट ट्रूथ ऑफ माई लाइफ टुडे। आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑन अ फोन that was disconnected 1 month ago because I could not pay the bill. And here's what broke me most. In the 30 days, मेरा फ़ोन सिर्फ 10 बार बजा है। सिर्फ 10 बार मेरे फ़ोन की घंटी बजी, वो भी रैंडम, या तो बैंक वालों ने या फिर रियल एस्टेट एजेंट्स ने। जब मेरा फ़ोन एक्टिव था, I used to call everybody, checking in, showing up, being there for them. But the moment it went silent, no one, not one person called to ask if I was okay. Not colleagues, not friends, not even my family. That silence taught me something I didn't want to learn. You are only as visible as your last phone call. Today, I don't have the money for a doctor's visit, to go for a checkup and buy medicine, what my body is asking. मेरे घर का रेंट ओवरड्यू है, मेरे किचन का राशन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट जो मैं यूज़ कर रही हूँ अभी आप तक पहुँचने के लिए किसी भी टाइम चला जाएगा। फाइनल वार्निंग आ चुकी है। I have known the heights of success. I have held the wealth, the projects and the status. जब सिलेंडर खत्म होने के लिए गैस स्लो हो जाती है, मुझे पता है कि मेरे पास एक दिरहम नहीं है और वो सन्नाटा एक अलग आवाज़ होती है उसकी। I have lived that reality in my last 730 days. जब बिल ना भरने पे पानी और बिजली का बिल कट जाता है, दुबई जैसी जगह पे मैं रह रही हूँ, तो उस सन्नाटे में चिंता की गूंज मुझे मेरे वजूद के होने पे मजबूर करती है कि मैं सोचूं ये गूंज क्यों हो रही है। मेरी हर सांस क्वेश्चन करती है, अर्चना तेरी लाइफ में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। It's an haunting echo reaching to zero when the world thinks that you are at the top.
360 डिग्री रियलिटी ऑफ माई लाइफ राइट नाउ, जो मैं पिछले 730 दिनों से अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से छुपा रही हूँ और अंदर ही अंदर जी रही हूँ। पिछले 730 दिन आई हैव लिव्ड इन वॉइड। जो भी हाई लेवल प्रोजेक्ट्स मैंने शुरू किए थे वो अब एक बिटर एंड कोल्ड साइलेंस में बदल गए हैं। वर्स, लो वैल्यू, underpaid opportunities, they ask for my soul but they refuse to respect my worth. Actually, I've reached a point where my expenses crush my existence. I have been stripped back to my absolute foundation. I thought I was being buried. एक पल के लिए तो लगा कि मेरा वजूद ही खत्म हो गया है। I didn't even exist anymore. पर मैं गलत थी। मैं ख़त्म नहीं हुई हूँ, ना ख़त्म हो रही हूँ। मैंने रियलाइज़ किया कि मैं ट्रांसफॉर्म हो रही हूँ। वो मिट्टी मुझे मिटाने के लिए नहीं है, वो मुझे मेरे रूट्स दे रही है, मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। I wasn't being worried. I was being planted. मैं आपको ये आज क्यों बता रही हूँ? Why am I telling you this today? आज रमज़ान का पहला दिन है, the holy month of Ramadan, जहाँ प्योरिटी, ब्लेसिंग्स, आगे बढ़ती है ज़िंदगी सच्चाई से। मेरी सच्चाई ये है जो मैं प्रिटेंड कर रही हूँ कि नहीं है, जो मैं छुपाती हूँ। मैंने डिसाइड किया कि मैं आज अपनी ये सच्चाई सबको दिखाऊंगी, सबको बताऊंगी। आई एम टायर्ड ऑफ प्रिटेंडिंग, आई एम टायर्ड ऑफ हाइडिंग। आई एम हियर बिकॉज द साइलेंस इज नाउ किलिंग द वेरी सोल आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू मास्टर। I kept smiling. I kept appearing as a fighter because I was terrified that if I show you my wounds, you will start judging me. You will start seeing me as broken. I am not broken. I am being distant. I was ashamed. मुझे शर्म आती थी कि मैं इतनी क्वालिफाइड हूँ, फिर भी घर पर बैठी हूँ। हर कोशिश एक नया फेलियर ला के दे रही थी। हर नेटवर्क जिसको मैं अप्रोच कर रही थी मुझे कोई रिजल्ट नहीं दे रहा था और सब पूछते थे, क्या हुआ अर्चना, जॉब क्यों नहीं लग रही है, काम कैसा चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप कैसी चल रही है। और मैं हंसते हंसते कहती थी, गॉड ब्लेस, अच्छा चल रहा है। मुझ में हिम्मत नहीं हुई बताने की कि कुछ नहीं चल रहा है, मैं बिखर रही हूँ। आई वॉज रॉन्ग, मैं नहीं बिखर रही थी। आई वॉज नॉट ब्रेकिंग। यूनिवर्स मुझे डिस्टिल कर रहा था और प्रिपेयर कर रहा था कुछ बेहतर के लिए। जब हम स्कूल जाते थे तो ज्योमेट्री में हमें पढ़ाया गया था कि 360 डिग्री इज़ अ फुल सर्कल, इट्स अ कंप्लीशन। बट इन लाइफ दे डोंट टेल यू that 360 degree is exactly the 0 degree also. It is the point where the circle closes and the ground disappears. I am standing at that 0 point now. I have been stripped of the wealth, the status, and the security. But as I stand here, I realize that I had to reach 0 degrees. I had to lose everything just to find the courage to build my own true legacy. I'm not broken. I'm being distilled. Pressure doesn't destroy the diamond, it creates it. Mera DNA isn't built on what I have. It is built on what I am when I'm nothing. Today,
On this auspicious Ramadan day 1, I am launching Archana 360 degrees from absolute floor, from the 0 point when you don't even have money for a light and the gas cylinder to be paid. This is the Archana 360 degree ways in its most brutal, honest form, created because I have nothing to lose now. जो बोझ 730 दिन लेकर मैं जी रही थी वो भी मैंने आज हल्का कर दिया आपके साथ शेयर करके. I am moving from broken to unbroken in front of your eyes. I am not just surviving this. I am reinventing what success in every degree looks like. My soul, I'm discovering exactly who I am when everything else is stripped away. My strategy, I am learning the art how to build a future when you have nothing but your own breath. My success, what I want to prove the world when your bank account is empty and your spirit is full. My spirituality, what I become when the world can no longer shake me because I've already survived that earthquake. Don't give me your pity. It's too heavy to carry. Give me your attention. I'm going to need it for what's coming next. I am Archana. I'm at 54. I'm at 0. And 0 degree. At the 0 degree, I am Archana once again. This is Archana 360 degree. Welcome. The work for my true legacy begins today. क्योंकि जान है तो जहान है. I created Archana 360 degrees for a very special person. And I want you to raise your hand quietly in your heart. If this is you, this is for the person who has achieved things, real things in their life and is now sitting in a silence that nobody prepared them for. This is for the person whose network has gone silent, quiet, who scrolls the LinkedIn and wonders why their story stopped, who is still smiling in public while something heavy lives behind their eyes. I see you because I am you, and I am not here to tell you that it's going to be fine. I am here to sit with you in it and to show you what becomes possible when you decide and you refuse to disappear. So, what is Archana 360 degrees? It's not a success channel. It's not a self-help channel. It's not a spiritual channel. It's all three. Because that's what life is. I call it the 360 degree ways, and it's built on the 4 pillars: soul, strategy, success, spirituality. Every week, I will share a story with you, a lesson, a tool, something real from 30 years of my experience. 3 continents I have traveled, more successes than I can count. No performance, no filters, no pretending. Just me and whatever this life is still teaching me. If you are watching this as someone who knows me, thank you for being willing to see me before the world does, for being the first witness to my chapter, which is starting today. I'll be honest with you, I don't know myself how the story will end. I'm still in the middle of it. But I know this. The version of me that stayed hidden was safe. She was comfortable. She was slowly disappearing. So this is me, choosing to be seen, choosing to build, choosing again to be unbreakable,
I am Archana. Welcome to Archana 360 Degrees, where we don't just survive the pressure, we become unbreakable because of the pressure. I will see you every Wednesday, and I'm so glad you're here. I want you to stand with me, subscribe, not just to watch the channel, but to witness my journey. A journey from 0 degrees, just a soul with the strategy. Share this for the ones fighting their own silent, for the ones who are at 0 degrees. It is their foundation as it has been mine. Let's rebuild. Archana 360 degree is for the people in the gap, for the people who are looking to become what they want to, for the people who are just going through their lives course up and down. Archana 360 degree is for you.